The next feature of planning is futuristic or forward looking, because we have not made the plans for the past activities, we have made the plans for the फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर एक्टिविटी जो हमें फ्यूचर में परफॉर्म करनी है हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ना कि पीछे की एक्टिविटी जो ऑलरेडी हो चुकी है हम उसके लिए प्लान नहीं करते हैं. सो प्लानिंग ऑलवेज लुकिंग अहेड. प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट. Manager try to make predictions and assumption for future course of action after scanning general environment. Why general environment? Why we are not scanning our internal environment? Can you say? Because we have to make the changes in our internal environment according to the general environment. Okay, not the internal environment affect the general, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. सो ऑल द मैनेजर्स की ये ड्यूटी है, दे गो फॉर द प्लानिंग बिफोर स्कैनिंग द जनरल इन्वायरमेंट, वट एवर द चेंजेस इन जनरल इन्वायरमेंट, what are the impact of the general environment on the business, and according to the opportunities and threats which will come in the near future they go for the planning. So that's why planning is forward looking. Why this is forward looking? Because planning is based on related with the future course of action. Now the next feature of planning is continuous. Why planning is continuous in nature? You know, the business is dynamic in nature, the situations are continuously changing. So the plans once made by the management or the different levels of management, it may not work in the changing environment. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लान हमने एक बार बना दिया वो हर सिचुएशन में काम करेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है. ओके, सो plans are made on the basis of the changes in the general environment. Planners keep making changes in the plans according to the requirement of the company. Whatever the changes are made in the general environment, it is the duty of the planners to make the changes in the plan also. Otherwise the plans made will not work in the dynamic environment. ठीक है, तो प्लानिंग कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, और इस कारण से जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं हमें अपने प्लान्स को बार बार चेंज करना पड़ता है. हम एक बार प्लान्स बना के ख़त्म नहीं हो जाती है एक्टिविटी. ओके, सो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, एवरी बिजनेस प्रिपेयर फोरकास्ट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर. फोरकास्ट मीन्स प्रोडिक्शन, क्या होगा, कैसे होगा in future course of action. At the end of the financial year, actual results are compared with the forecast to evaluate business performance, and a new forecast for the new financial year is prepared. आप बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है अदर देन प्लानिंग? सो दिस इज़ अ कंट्रोलिंग. क्योंकि हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वट एवर द प्लान्स वी हैव मेड, एट द ending of the specific period of time for which the plans had made, we have compare the actual result with the standard result, and if any deviation will come, again we have to make a new plan, so these deviation will not come in the near future. So that's why planning is continuous. क्योंकि एक बार जब हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं और उसमें कुछ अंतर आता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में, तो हम फिर से नया प्लान बनाते हैं ताकि ये अंतर फ्यूचर में ना आए. दैट्स वाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर. द नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. मीन्स there are different kinds of decisions are taken by the management. Planning function is needed only when different alternatives are available. Can you say if you have no choice in a particular situation, you cannot make any plans. So planning will happen if there are alternatives.
यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है देन यू हैव टू फॉलो दैट पाथ ओनली, तो वहाँ प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। प्लानिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास कई रास्ते होते हैं एंड यू चूज़ द बेस्ट वे टू अचीव योर टारगेट, योर गोल। सो द प्लानिंग फंक्शन is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in the absence of choice, because in planning function manager evaluate various alternative and select the most appropriate. manager भी वही करता है, जो अलग अलग रास्ते हैं उसमें से जो बेस्ट वे है वो उसको सेलेक्ट करता है। बट इफ देयर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है, कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर प्लानिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मीन्स यू कैनॉट गो फॉर प्लानिंग। यू सी इन द एग्जाम्पल, अ बिजनेस प्लानिंग टू रेज फंड will evaluate all the available resources like different banks, loans from friends, investors, personal saving, etc. to decide which will cost the least in term of interest and repayment. अब आपने इस सिचुएशन में देखा कि हमें फंड रेज करना है, तो हम अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम बैंक से लें, अपने फ्रेंड से लोन लें, इन्वेस्टर्स से लें, अपनी सेविंग यूज करें। सो देयर आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव the choice to select which one is best. Suppose if there is no choice available, only you're saving with you, then what will happen? There is no planning. So planning कब होती है? जब हमारे पास अल्टरनेटिव होता है, रास्ते होते हैं, वेज होते हैं, यानी कि कई तरीके होते हैं एक पर्टिकुलर लक्ष्य को पाने के लिए, और उस पर्टिकुलर लक्ष्य को पाने के लिए आउट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। सो दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन से रास्ते को चुनें। ओके, सो दिस प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट feature of planning is mental exercise. Why planning is mental exercise? Because it require intelligence, creativity, attention, your memory power, your ability to analyze the given situation and determine the best course of action to be taken. क्योंकि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं और कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट होगा, यू गो फॉर थिंकिंग, यू गो फॉर मेंटल एक्सरसाइज। आप आसानी से उसे तुरंत नहीं चुन सकते कि ये बेस्ट होगा। यू गो फॉर ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव एंड फाइंड आउट द प्रोज एंड कॉन्स, किसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलिजेंस लेवल, योर एक्सपीरियंस लेवल, यू एनालाइज द प्रॉब्लम and select the best alternative out of the alternatives available. Planning is a mental exercise which requires higher thinking. That is why it is kept separate from operational activities by Taylor. You know who is Taylor? F.W. Taylor. You have already studied about the scientific techniques of Taylor. Which technique of Taylor here highlighted, where the thinking work is separate from the production process. Yes, this is a functional foremanship in which the Taylor insists that there is a division of planning department and production department. So the people who are engaged in planning, they are free from the work of production department. उन्हें production का लोड ना हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना कॉन्सेंट्रेट कर सके, बिकॉज planning requires high level of intelligence ability. So in planning, assumptions and predictions regarding futures are made by scanning the environment properly. और जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्कैनिंग we have to take the necessary decision. So in planning, various alternatives are evaluated and the most suitable is selected, which again require higher level of intelligence.
आप समझ गए हैं कि प्लानिंग क्यों मेंटल एक्सरसाइज है, बिकॉज यहाँ पर आउट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, और वो उस बेस्ट वन को चूज करने के लिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इफ़ यू आर selecting the wrong alternative we will not achieve our goal, our target in time. That's why planning is a mental exercise.